सर आपका माइक ऑफ है. Yes, I mean, the possible difference is that in the third one, the loan stock in clause C, in this situation, company borrows the money, and against that borrowing, company is issuing the shares. Direct shares, यानी ओनरशिप उनको दे रही है, although उस लोन से वो उसका जो फंक्शन है, that is a fixed rate. है वो टाइप ऑफ लोन ही है, लेकिन एज ए सिक्योरिटी वो उनको शेयर दे रही है. ठीक है. वाइल जो बी में है लोन स्टॉक, दैट इज प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल लोन एग्रीमेंट काइंड ऑफ. वो डिबेंचर भी हो सकते हैं, या वो कोई और टाइप ऑफ डेट सिक्योरिटी, लोन सिक्योरिटी हो सकती है, बट उसको हम शेयर्स नहीं कह सकते. सो पॉसिबल है कुछ कंपनी शेयर दे देते हैं, जब तक ऑब्वियसली आपके पास शेयर्स होंगे तो उस शेयर्स की सेल परचेज आप कर सकते हैं. दे कुड बी फर्दर सोल्ड आउट, और यानी ये उनको बेनिफिट रहता है. और इसी तरह स्टॉक जो लोन स्टॉक है, दे कुड आल्सो बी सोल्ड एंड परचेज एंड सोल्ड. मार्केट में उनकी भी वैल्यू होती है, वो भी किए जा सकते हैं, लेकिन शायद उनकी वो वैल्यू नहीं होती होगी जो कि शेयर की होती है. तो इट कुड बी डिपेंड अपॉन the company and the parties to opt either of that. But शेयर का होना एज ए कोलेटरल, आप जब उनको अपने कंपनी अपने शेयर्स इशू कर दे, दैट विल बी कंसीडर्ड एज लोन स्टॉक सी के कॉन्टेक्स्ट में. जमशेद. तो सर फिर इसमें हम ये कह सकते हैं कि लोन स्टॉक में जब उसको हम लोग कंसीडर करते हैं कि वो शेयर की शक्ल में मिल रहा है उसे, तो वो जब उसे होगा तो उसे हम कहेंगे कि ऑर्डिनरी शेयर ही वो होगा, यानी कि जो शेयर की एग्जिस्टिंग टाइप्स हैं उनमें से कोई एक बनेगा, या उसकी शक्ल मजीद चेंज हो सकती है. आई मीन अगर मुझे ये ऑफर मिलती है कि आपको हम लोन स्टॉक देते हैं, और वो जो शेयर मुझे मिल रहा है वो शेयर मैं कहता हूँ कि जी मुझे ये शेयर जो दे रहे हैं आप, इसको आप अहमियत दें प्रेफरेंस शेयर्स की या कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर की या किसी और की, तो क्या मेरी बात सुना जाएगा? मेरा गेस यही है दैट नॉर्मली प्रेफर्ड स्टॉक्स आर इशूड इन लोन स्टॉक. रीजन क्या है? प्रेफर्ड स्टॉक पे ही आपको फिक्स प्रॉफिट आ रहा होता है. आपकी जो रिटर्न होता है नॉर्मली फिक्स्ड होता है प्रेफर्ड में. यू सी, so I think ideally the people would go for the preferred stock here.
But obviously, its shares are all about the contract. It's between you and the company. So you are two parties, और आप जहाँ पे give and take कर सकते हैं वहाँ पे agree हो सकते हैं, I guess. सॉरी सर ये जो प्रेफरेंस शेयर्स की आप बात कर रहे हैं ये इसमें फिक्स वाली बात होती है या ये होता है कि ऑर्डिनरी के ऊपर प्रेफर किया जाता है उससे? आई मीन जो फिक्स वाली बात है वो तो डिबेंचर के जुमरे में आ जाती है ना, कि जब एक बंदे के पास डिबेंचर है तो उसको कहा जाता है कि आपको फिक्स इतने मिलेगा। शेयर्स में तो वो ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें भी फिक्स होता है, हम डिस्कस करते हैं अभी। नेक्स्ट स्लाइड में हम जरा इनको देखते हैं, प्रेफरेंस और ठीक है सर सेकंड क्वेश्चन है मेरा छोटा सा एक, ये जो आपने पढ़ाया था फिफ्थ या सिक्स्थ जगह एनी राइट और एनी ऑप्शन की बात, जब मैं उस राइट को अवेल कर लूंगा चाहे मैं सब्सक्राइब करता हूँ शेयर को या चाहे मैं करता हूँ डेट की साइड पे, तो उसके बाद वो जो शक्ल चेंज होगी तो मैं इसी सिक्योरिटीज की किसी मजीद क्लॉज में चला जाऊंगा ए बी सी डी में? यस ऑब्वियसली, फॉर एग्जांपल ऑप्शन की हम बात करें, एन ऑप्शन टू एक्वायर अदर सिक्योरिटी or dispose of any other security. So once you have exercised that option, so you become shareholder. Complete जितने shares का आपको option दिया गया था उतने के आप entitled हो जाते हैं। एंड सर लास्ट क्वेश्चन है कि ये जो उन्होंने एक्सक्लूड किया है लेजिस्लेचर ने सी को, प्रोमिसरी नोट्स को, ए बी और डी तो समझ में आता है, सर सी को करने के पीछे हिकमत क्या है उसकी? आई मीन प्रोमिसरी नोट के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट तो हमें मिलता है बाकी चीजों में, कि जो डिबेंचर होल्डर है उसको पीछे भी उसको जो है सिक्योरिटी मिल रही है, शेयर वाले को भी सिक्योरिटी मिल रही है कि वो शेयर बेच सकते हैं बाद में, प्राइवेट हो या पब्लिक कंपनी हो। यहाँ पर प्रोमिसरी नोट को एक्सक्लूड क्यों किया जा रहा है? मेरे माइंड में ऐसा कोई इसकी आंसर मेरे पास है नहीं, I'm not sure. पूछ लीजिए किससे पूछ लेंगे, ठीक है। Now is this clear? Security and Exchange Commission of Pakistan. Yes, sir, clear. ठीक है। Now again something more about that. Now all the people, as I told you, Commission is basically a regulator of all the persons, either natural or artificial, who are directly or indirectly involved in the exchanges of these securities. Securities की सारी kinds आपने देख ली। So you see कि म्यूचुअल फंड के जरिए normally capital is raised और further investment की जाती है, तो सिक्योरिटीज की एक्सचेंज हो रही है, रेगुलेटेड बाय SECP। हाँ, जो बैंक है उसमें भी फाइनेंस इन्वॉल्व है, लेकिन उसको कम्प्लीटली स्टेट बैंक देख रहा होता है। अच्छा, सिमिलरली अ पर्सन who is a broker, stock exchange में the people who are sitting there as a broker, they help you to buy the shares on the stock exchange or buy the securities on the stock exchange. They are also being regulated by SECP. They have to get license from SECP. They have to pay certain fees. जितने भी हैं, the brokers are could be individuals and they are companies as well on the stock exchange. Similarly, the stock exchange companies as well. आपकी जो stock exchange company है, Pakistan Islamabad Stock Exchange, or previously there were 3 stock exchanges. So these were the companies, and what was happening on the forums of these companies, these were providing a forum to the other companies to do trading of their securities here. उन companies के जो debts हैं वो यहाँ पे sale purchase किए जा सकते हैं। These stock exchanges companies, they are also regulated by SECP, क्योंकि इनकी भी involvement है, direct involvement होती है in exchange of securities में, they are also regulated by SECP. Securities Act के अंदर you will find that. इसी तरह आप और क्या, इन्वेस्टमेंट बैंक, ये सारे म्यूचुअल फंड जो होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं, they are regulated by SECP. So securities and their exchanges and all the people
involved in the exchanges, they are being regulated by SECP. That is why it is known as SECP. So the purpose was to, in fact, to familiarize you with the concept of security, and in this way you could better know everything is SECP के term से, now everything that could be involved in the exchanges of these securities, you could presume that that iski jo regulating authority, that is SECP, and you should try to approach SECP और या उसके further rules website पे देखें और उसको अपना जो भी काम कराना है वो करा लें, ठीक है. Types of capital में ये जरा सा I think some of you people might be aware, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ aware नहीं थे, तो इसलिए I thought कि थोड़ा सा हमें introduction हो जाए इनके बारे में. I think most of, maybe not all, you are familiar. जो capital of the company होता है, that is basically the whole sarmaya of the company, and that capital could have different kinds or types. वो that has been, उसको अगर हम just quickly देख लें, the first kind is the nominal capital or the authorized capital or the registered capital. ये तीनों नाम इसके लिए यूज की जाते हैं, and this is basically the upper limit of the company. The company may get itself registered with any capital it likes, no worries about that. So मैं जो जब दूसरा capital की type बताऊंगा, तो then it could be rather more easily understandable. So it is obviously mentioned in MOA of the company. जब आपने जो documents मैंने आपको दिए थे, you might have seen there was a paid up capital option and there was an authorized capital option. So authorized capital, you have to mention it in your MOA. It's divided into shares, obviously. आपने इसी को divide करना होता है per unit में of the capital. If it's your capital is 1 million rupees, so you need to have a certain number of shares, और हर share की कोई हर unit की एक value होगी और होनी चाहिए. And this is the maximum amount of capital a company may raise or can be altered by ordinary resolution. Normally authorized capital आप एक fix करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भी करना चाहते हैं, तो आपने just अपना ordinary resolution के तहत आप उसको कर सकते, बल्कि मैंने mention किया है इसमें AOA change होगा, and then you can raise your capital. So authorized capital, because director are authorized to this limit, इसको इसलिए authorized कहा जाता है कि इसके beyond directors transactions नहीं कर सकते. इसके अंदर रहते हुए directors, board of directors अपने company के affairs को manage करने की कोशिश करेंगे. The other type is the issued capital. That is basically the capital which has been actually issued by the company. As I told you, authorized capital is the maximum tab, and issued capital is said to be the actual capital which has been released or issued by the company. And obviously the persons who have either purchased, the other party, जिसे आप subscriber भी कह सकते हैं, the buyer purchaser भी कह सकते हैं, he has either purchased or he has promised to purchase that share. So issued capital is that capital which has been issued by the company, and the shareholders, they have either paid for that issued capital or they have promised to pay for that capital. Unissued capital, obviously this is the difference between authorized capital and the issued capital. जितना company ने issue कर दिया है, जो remaining है, that will be unissued. So authorized में से जितना issue हो गया, that is the issued capital, which has not so far been issued. It is known as the unissued capital. अगर ये term, if you come across that, तो at least you should have some know about this. Subscribed capital is basically the capital that is subscribed by investor after offer by the company. You might be aware that from time to time, company offers its share to either the public or to special investors to
buy its shares. So subscribe capital means everything that came from the third party for the purpose of investment. लेकिन this is only a subscription. ये originally issued capital नहीं होगा. It's just like that जैसे आप एक public offering करें या prospectus issue करे company that I want to sell my shares 1 million shares में worth of each worth of 10 rupees मैं अपने shares issue करना चाहती हूँ. When it gives a public offering, तो possibility है कि more people pay their capital, pay to buy the shares. क्योंकि जब भी कंपनी के शेयर्स परचेज किए जाते हैं तो अंडर द लॉ दे आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द होल अमाउंट. तमाम जितनी शेयर्स, फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू बाय 100 शेयर्स, तो 100 शेयर्स के मुताबिक जितनी उनकी वैल्यू होगी आई हैव टू डिपॉजिट दैट अमाउंट in the bank as well as a token that I am really interested. So all that subscription money and the capital that has been gained by the company, it is called the subscribed capital. But obviously, as against this subscribed capital, the issued capital is that which is actually now issued by the company. Subscription आ गई, अब company ने decide किया मेरे पास वो subscription I had intended to issue 1 million shares, but I have got offers of 2 million shares. But actually चूंकि उसने offer ही 1 million की थी, तो it is now issuing only 1 million shares. It will select among the subscribers, उनमें से किसी को भी वो 1 million की हद तक चाहे प्रो रेटा दे दे, चाहे जो भी करे, या कोई क्राइटेरिया रख ले जो टॉप बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर ले. इट कुड बी अप टू द कंपनी. और क्या एक पॉइंट था इधर मेरे माइंड में, चलिए अगर आता है तो मैं बताता हूँ. यस, called up capital, paid up capital or unpaid capital. Called up capital is that company cost to be paid by the person whose shares is issued. Is very rare. I think company law हमारा पता नहीं से allow करता है या नहीं करता. Simply, if you see in the issued capital, I told you that issued capital against which the shareholder has either paid or promised to pay. It means he has not yet paid, but he has promised to pay in the future. So the amount which has not been so far paid could be said to be a called up capital. It could be called by the company anytime. So that is a called up capital. And the paid up capital which has been actually paid by the Jenny promises which has been actually paid. That part of the issued capital which has been actually paid is the paid up capital. And unpaid capital वही हो जाएगा आई थिंक जो कि called up capital है, I guess. Conversely, paid up capital is the amount of capital that has been paid on shares issued. Unpaid capital is the amount remaining unpaid on the shares issued. At least for public companies, these terms are unimportant as applicant is to pay full nominal amount of shares with his application section 91 of the Companies Act. Any paid up capital, called up capital or unpaid up capital is not now relevant. जब भी आप अपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाहते हैं पब्लिक कंपनी के, तो आपने सारी अमाउंट अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट कराना होती है. So may not be that much important. यहाँ तक कोई क्वेश्चंस? No? अच्छा, आई थिंक शेयर्स को भी हम जरा सा ब्रीफली मैं डिस्कस कर लेता हूँ. इसकी जो 2-3 टाइप्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं. बट बिफोर दिस स्लाइड आई थिंक इट मे नॉट बी रियली very important for you. It just says that you have read that article in which the
tangible and intangible shares की जो capital की जो discussion हुई थी foundations of corporate law में, conceptual foundations of corporate law, तो उसमें जो आपने देखा है कि previously shares was considered to be the actual share into the company, and gradually it became an intangible, it has assumed an intangible form. Now it has certain rights attached with that, but you cannot claim to be the actual sharer in the assets of the company. So this is the definition of share. A share and interest of a shareholder in the company measured by the sum of money for the purpose of liability in that first place and interest in that place. Obviously, जब आप एक company में आप shareholder हैं, तो आप पे liability भी है, although limited liability है, but still at the first place you are liable. If there is any loss, तो आपका जो share है, at least to the extent of your shares, you may lose that. And secondly, you have interest into that company because you can get profits, dividend at the end of the year. So normally these two rights are recognized in the company. Achha, now this clause is important. This slide is important. It says that presumption of equality of shareholders. जैसे partnership में ये होता है, if you are aware of the fact, partnership में it is not, your contribution doesn't matter, you matter. So your vote is one irrespective of your contribution. Partnership में ऐसा होता भी है, हो भी सकता है. So but company law में at least there was historically there were different scenes. This may, as you can see, Companies Clauses Act 1844 में, तो पहला कंपनी एक्ट आया था 1844 का, उसके बाद ये क्लॉजेस एक्ट आया था 1845 में, which says that every shareholder के पास एक वोट होगा for the first 10 votes for the first 10 shares, then one vote for each share, for each 5 shares up to 100 shares, and then one vote for each 10 shares. But defeatable if I divide my shares into my, it means historically ये possible था, बल्कि ये होता था कि जो first 10 people हैं, जो first 10 अगर आपने कोई शेयर परचेज किए हैं, तो आपके first 10 shares का जो वोट होगा वो एक होगा. Then one for each 5 up to 100. फिर 10 के बाद हर 5 शेयर के लिए आपका एक वोट होगा, up to 100. यानी 100 तक जब आप जाते जाएंगे तो आपको एक वोट मिलेगा against 5 shares. You see, are you getting? I mean, simply if I just simplify that, कि आपके फर्स्ट, अगर आपके किसी कंपनी में 100 shares हैं, तो it doesn't mean that you will have 100 votes. It means that you will have 10 plus 90 divided by 5 कर लें, तो that will make it 18. So 100 के against आपके पास 18 shares, 18 votes होंगे. And then one vote for each 10 shares. इस तरह जब 100 से exceed करेंगे, तो फिर अब 10 पे आपको एक वोट मिलेगा. So that was a kind of thing जो कि previously company law में हुआ करती थी, ताकि जो dilute हो जाए कुछ voting powers. Lekin for many years, absence of provisions in AOA and MOA can't abrogate equality of shares. So historically, in fact, it was important to have the equality of shareholders, or shares की equality, equity, यानी all the shareholders should have equal voting right in the company. ये historically ऐसा trend था. लेकिन फिर एक ये जो केस था, you can see Andre versus Gas Meter Company, इसमें ये lay down किया गया था that AOA can alter equal rights if not otherwise provided by MOA.
अगर आपका MOA साइलेंट है तो आप AOA के तहत अपने जो राइट्स हैं शेयर्स के वो चेंज कर सकते हैं. So that was a big development. इसी की वजह से now you may find different types of shares in a company, up to highly recognized हैं. बल्कि if you remember पाकिस्तान में, yes you can see here, पाकिस्तान में Companies Act 1804 had different classes of shares. जो 84 से पहले हमारा एक्ट था उसमें different classes थे, but section 19 of ordinance provided for ordinary shares until 1999. जो ordinance हमारा आया था उसमें उन्होंने preference shares, I mean उसमें types of share को उसने खत्म कर दिया था. उससे पहले there was a possibility to have different types of shares. Ordinance 84 ने उसको खत्म कर दिया था unless 1999 में उन्होंने ये इसको undo किया. It means from onward, 99 onward, company could have different types of shares. और उसी वजह से according to the section, company may have different classes of shares as provided in MOA. और इसी की basis पे इन्होंने ये फिर rules SECP ने issue किए थे. Share capital variation in rights and privileges, according to which share capital may have different kinds and classes of shares. I think you might have come across these rules. Jamshed, have you ever come across these rules? Jamshed. हेलो जी जी. मैंने सर कहा आवाज आपकी कट रही है बहुत ज्यादा. मैंने कहा have you come across these rules before? हेलो Rafi, am I audible? Yes, sir. As far as for my concern, I am audible. हेलो Clear है या disruption थी? Jamshed has some issues. Disruption थी मेरे sound में? नहीं सर, continuously ठीक रही सर. अच्छा, Jamshed, yes. So Rafi, have you come across these rules before? No, sir. This Okay. rules 2000, sir. No, Yeah, never, yeah. sir. I'm not listening your voice. So Jamshed, you have problem. Rest of the people, they are listening me. Rafi, tell him that there could be a problem on his part. Acha, so these are those rules. These are those rules जिसकी वजह से company may have different types of shares. और वो क्या types, किस basis पे types हो सकती हैं? इतना, do you remember वो कौन सी possible types थी या कौन सी basis पे different types हो सकती थी? सर शेयर्स की वही टाइप्स जो मैंने आपको बताया था कि प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन वोटिंग शेयर्स, जो मुझे किसी हद तक याद थी सर. उसके अलावा Exactly. So these sections, I think rule 4 of these rules, they provide for any right or privileges to the share as following. Yani there's a possibility to have these variation in the rights of shareholders. You can provide through your AOA. Article of Association के तहत आप different shares की types रख सकते हैं. What are those rights? Number one, different voting rights. It means certain shares, and ultimately the shareholders, जो उनके buyers हैं, they may have different rights as to the vote in the company. So what could be those different voting rights? Number one, voting rights disproportionate to the paid up capital value of the shares held. It means if I am holding 1 million shares, जिनके voting right मेरे 1 million बनते थे, but I may have half of that paid up capital.
I may have 1/3, and even I may have 2 million. उससे डिस्प्रोपोर्शनेट इस तरह भी हो सकता है कि मेरे जो वोटिंग राइट है वो उससे ज्यादा भी हो सकते हैं. डिस्प्रोपोर्शनेट ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं. Voting rights for a specific purpose only means I will have voting right only to the extent of change of share capital or some other matters, but not generally. तमाम जो कंपनी के अफेयर्स में मेरा वोटिंग राइट नहीं होगा, या कुछ जो मोस्ट सेंसिटिव चीजें होते हैं उसके लिए वो अपने राइट्स को कुछ उनको नहीं देते हैं. अच्छा, अटेंडेंस अभी टाइम है, मैंने लेट स्टार्ट किया रफी, तो अटेंडेंस ले लें, वेट करें. अच्छा, similarly different rights for entitlement of dividend. This is the other type, this is the other basis on which there could be different, the difference of the shareholders. It is like कि dividend जो है, certain people can have preference over dividend and certain may not have preference. जो preference share का concept है वो वही से आया है. Dividend से related means they will have preference over the dividend of the in the company. Right shares or bonus shares are entitled to receive the notices and to attend the general meeting. कुछ shareholders को आप right to attend the meeting ना दें या दें, up to you. यानी आप अपने कुछ shares ऐसे रख सकते हैं, and you can mention with shares without voting right, and that could be acceptable. उन shares का जो only entitlement होगी, that could be only for profit. General public के लिए आप इस तरह के वोटिंग राइट रख सकते हैं, और जो आपके स्पेशल इन्वेस्टर्स हैं, आपके बिग इन्वेस्टर्स हैं, उनको आप प्रेफर्ड शेयर्स दे सकते हैं. The last is about rights and privileges for indefinite period, for a limited specified period, or for such period as may be from time to time determined by the members through special resolution. यानी ये भी हो सकता है कि आप कुछ शेयर्स के साथ जो राइट हैं या प्रिविलेजेस हैं, उनका ड्यूरेशन उसको ड्यूरेशन के साथ लिंक कर दें. मींस you will have shares or you will have preferred shares for 3 years, and afterwards they will become common share or ordinary shares. So it is also possible. और इन रूल्स की बेसिस पे जो प्रैक्टिकली हम शेयर्स देखते हैं, that could be, वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. कैन वी चेंज दीज राइट्स अटैच विद द शेयर्स? क्वेश्चन मैं वैसे आपसे कर लेता हूँ. जमशेद, नईम, जी सर. अच्छा, वो मुझे ये बताओ कि वो अली किधर है? अली नकी, इज ही देयर? सर असल में अली तीन लोग हैं हमारी क्लास में. अली मुमताज सर या अली नकी सर? नहीं, अली नकी वो एट कोरोना. जी जी, अली नकी. ठीक. Has he recovered from his corona situation? He is connection with us, but he didn't tell anything that whether he has recovered or not. But I will ask sir. You people know that he had corona? Yes sir, we knew in previous lecture. I think by now he should. बल्कि मुझे आज ही अपडेट कर दें. I was really worried about him because he had lost his taste when I was taking his Viva last time. So I was really curious to know about his updates. अच्छा, तो Naeem, do you hear me? Yes sir, yes I can hear you sir. तो मैं ये तो आपका क्वेश्चन था जी जी, my question your was, rights. yeah, ये जो rights अभी मैंने आपको बताए हैं, the shares can have different rights attached with them. Can we change these rights? Sir, क्योंकि since the rights are associated with the shares, अगर किसी शेयर होल्डर के शेयर्स के अंदर कोई सिग्निफिकेंट चेंज आती है, फॉर एग्जांपल वोटिंग राइट्स की अगर बात करें तो
तो अगर वो उस क्राइटेरिया को चेंज उसमें उसके शेयर्स में कोई डिफरेंस आता है, फॉर एग्जांपल वो अपने शेयर्स बेच देता है, फ्रॉम मेजॉरिटी शेयर होल्डर से आप माइनॉरिटी शेयर होल्डर बन जाते हैं, तो डेफिनेटली द राइट्स एसोसिएटेड विद द शेयर्स विल चेंज. Yes, change तो होगा, but can company change those rights attached with the shares? मेरा question है. Companies cannot at their own, rather it is the prerogative of the shareholders that the, I mean, when we say company, it means all the shareholders. yes, तो उसमें अगर आपने आपका जो मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, में अगर चेंज करके तो हो सकता है वो कर लेंगे, क्योंकि जो शेयर्स के राइट्स हैं वो प्राइमरीली शेयर होल्डर्स के राइट्स आर डिटरमाइंड बाय द प्रोविजंस ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के साथ ही वो डिटरमाइंड है. तो वहां पर उनका जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है उसको अमेंड करके दे कैन चेंज द राइट्स एसोसिएटेड विद द शेयर्स आल्सो. फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी डिसाइड कर लेती है. Yeah, you have partially answered it correctly. Means primarily, yes, you have to change. You have to alter your AOA because normally you give different rights attached with different types of shares. So that could be done through changes in the AOA. You change the AOA and you can change the rights attached with different types of shares. Am I clearly audible? नहीं. Yes sir. Yes. Disruption तो नहीं है ना वॉइस? बीच में है सर, थोड़ी शायद इंटरनेट कनेक्शन का कोई इश्यूज है, लेकिन मेरी साइड पर अभी बेहतर है सर. बेहतर है. रफी, यू टेल मी. जी सर, ठीक है, मेरे साइड पे तो ठीक है सर. नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्ट्रप्शन आती है बीच में. जी, दरमियान में कुछ सेंटेंस सर दरमियान में, लेकिन बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कभी कभी हो जाता है सर. अच्छा, चलिए ठीक है. अच्छा, एज आई टोल्ड यू कि जो डिफरेंट शेयर्स राइट्स हैं दे कुड बी चेंज, लेकिन you have to follow the procedure as provided in section 38. It's all about section 38, which is about changes in the or alteration of AOA. And that, number one, that requires when you have to alter your AOA, you need, number one, special resolution of the company. And you know what is special resolution? हसन जी सर, उसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए. 3/4 आपको मेजॉरिटी चाहिए होती है, ठीक है जी सर. 3/4. Fine. 3/4 special resolution means you need 3/4 majority of the shareholders, जो कि डिफाइन किया गया है कंपनी एक्ट में. और जिस मीटिंग में आपने डिसाइड करना है, यू मस्ट हैव गिवन अ 21 डे नोटिस बिफोर दैट मीटिंग, जिसमें आपने कोई रेजोल्यूशन पास करना है किसी भी कंपनी के किसी एंगल से, किसी आइटम और एजेंडा पे. लेकिन when you will be talking about changes in AOA which are going to alter the rights of any special shares, which are going to change the rights attached with any shares. In that case, you not only need special resolution, in addition to that, you also need the 3/4 majority of affected shareholders.